say rock to the rhythm, but don't stop. 'Cause get a funk's got beat, short shot. I say rock to the rhythm, but don't stop. Get a funk got beat, short shot. I say rock to the rhythm, but don't stop. 'Cause get a funk's got beat, short shot. मेहरबान कदरदान दोस्तों, आज महफिल जमी है यार लोग की है। क्या बोलती है पब्लिक? कैसे हरीश भाई, नारायण? मजे अभी अपने मजे में अपने यार दोस्त आ रहे हैं। आज मृगेश भाई आ रहे हैं, हरीश भाई आ रहे हैं। आई थिंक हरीश भाई फिर से उनका कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है, पर वेलकम, सब स्वागत है सबका हिंदी अनकॉमेंट्री इस स्पेशल एपिसोड में। मेरे साथ है मेरे दोस्त नारायणन और हरीश। नारायणन ज्वाइन कर रहे हैं कटक से एंड हरीश इज इन मुंबई। हरीश मेरे फर्स्ट जॉब में हम लोग साथ में थे। जब मैंने ज्वाइन किया था, तब जब मैं लीव कर रहा था तब हरीश आए थे। और सेम मृगेश के साथ भी ऐसे है। मृगेश अभी थोड़ी देर में आएंगे होपफुली। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कनेक्ट किया था, बट देन उनको कोई अर्जेंट कॉल आया, सो उनको जाना पड़ा। बट यस, लेट्स डिस्कस कल की जो विक्ट्री थी। हरीश भाई बोलिए, आपकी फीलिंग्स कैसा लगा? एज अ फैन हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप पे, दैट इज टोटली डिफरेंट। लेकिन जब हम लोग मैच देख रहे हैं, आप बताइए आपके घर पे क्या माहौल था एंड कैसा लग रहा था? ऑल द फीलिंग्स प्लीज शेयर कीजिए। I mean, honestly, when it was lunch, we had given up hopes. Would India win? Would it not win? I mean, the hopes were not there. Yeah. And suddenly, 1 hour post lunch was a completely different scenario altogether. I mean, the hopes, the beliefs, that same Indian team which defeated Australia came back. Yeah. So that 1 hour changed the entire game. Okay, till then it was like हाँ होगा, लेकिन वो belief नहीं था. That 1 hour made the entire change in the belief that yes, now we can compete. And वो बुमराह के जो 2 wickets, especially those 2 wickets where he got Oli Pop and Besto. I mean, that was a game changer. Yeah, absolutely. नारायण, तू बता, तू जब मैच देख रहा था यार मेरी तो धड़कन इतनी रेस हो रही थी यार, मुझे खुद नहीं पता था कि मैच देखूं कि नहीं देखूं। पर जब पूरे 5 दिन जो इतनी जबरदस्त क्रिकेट हमने देखी है, टॉपसी टर्वी बोल सकते हैं ना, एक कभी कमांडिंग पोजीशन में थी। हर टीम को एंड ऑफ द डे उनकी स्ट्रेंथ और उनकी जो अप्रोच अलग थी दूसरे दिन की स्टार्टिंग में। और ये एक काफी बेहतरीन मैच था। जैसा ये दिस काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी ऑफ द सिडनी टेस्ट। जैसा इंडिया एक टाइम पे वक्त के लिए भी खेल रहा था, रन्स बनाने के लिए भी खेल रहा था। तो ये काफी अच्छी मैच थी। यस, Absolutely. And I mean, this is one match which you'll always remember. I mean, there are some like the Gaba test. I mean, there are memories that you will. I mean, highlights, Gaba test highlights, you will always want to watch. This is a match, where we were trailing by 99 runs, coming back and scoring above 400 runs. Yeah. And making crucial partnerships when they were needed. The partnership between Pant and Thakur was the most crucial partnership. I think that took away the game from England. Had that partnership not been there, England would have had sniff victory post lunch. Because then it would had been hardly 150 or 160 more to get. Other than 260, it would be 160, and they would have sniffed victory, I believe, at that point of time. And even the Indian shoulders would have gone down. Just by taking 2 wickets and having 160 to defend with 8 wickets to go post lunch, it would have been difficult. So I think that partnership and Bumrah's 2 wickets, they were the most crucial part in the entire match. Yeah, absolutely. And before we move ahead, we are waiting for Vinay. Vinay is joining us. Great. Hi. Yes. I'll come back to you, Harish bhai. Some very valid point aapne jo bataya abhi. We'll get the reaction from Vinay first, and then we'll share your point and let Vinay and Narayanan share their opinion इस बात में. ठीक है?
आ जाओ भाई विनय. Yes, finally I could book. ये बुकिंग हो गया नारायणन. Yeah. But the thing is, पैसा 2 बार कटा है. पैसा 2 बार आएगा रिफंड आएगा. भरोसा रख. रिफंड आएगा. हौसला रख. Okay, Vinay, welcome to the show for the first time. And सबसे पहले मेरे को बता यार, the reactions कल का जो amazing victory था. How did you feel and what was going on watching this amazing test match that we'll remember for a long time? Harish bhai ne abhi bola. What are your thoughts? Bol bhai. I mean, at some point going into the 5th day, we all knew England obviously could not chase. They had to, they had to be on the defensive side. So India had that opportunity always there. They always had that opportunity. And the pitch, although you could see, there were some rough areas near the pitch. So utilizing Jadeja was the key point. He was trying to hit those rough patches. You could see on the 4th day, during the end, he could not hit it properly. But on the 5th day, he was hitting those rough areas exactly, and that is when Bumrah came in, and he just brought mayhem to the English batsmen. Oh, absolutely. So they were Bairstow ka look was so, that look I can keep. I just remind me that Bairstow when he got out, he was like devastated. What happened with him? Uska wo look tha na, he did not want to walk from there. I mean, it was like he knew it's over now. When Bairstow got out. Yeah. I mean, Sorry, no. Yeah. नहीं बोलो. नहीं, मैं ये बोल रहा था कि उसके बाद रूट जब आउट हुआ, वो ऐसा बैक सर पे मारा. क्या हो गया ये? So I mean, the best part was, we got so many boards yesterday. It was not Knicks. Yeah, sorry. Root का जो विकेट जाता है, yeah. Yes, Harish. Sorry, आप कुछ कह रहे थे. नहीं, I missed the track. नारायण बोलो. Oh, sorry. No, it's wonderful. सबका excitement. मैं बता रहा था कि जब रूट का विकेट गया, it reminded me of my the cricket playing days. मुश्किल से बैटिंग जब आती है तो either overs बहुत कम रहती है या it is an impossible target to achieve. तो at that point of time आपका एक ही ख्याल आती है कि साला जितना बैटिंग मिल सकता है उतना अच्छा है, क्योंकि आपके लिए मौका मिल रहा है मैच खेलने का. जब आउट होते तो बहुत गंदा लगता है. मैं भी but yeah, it was a good match यार. I mean, to be honest, नहीं, मैं टीम में बॉलर के वास्ते आता हूँ ना, तो मेरी तो बैटिंग लोअर डाउन आती है. तो उसके बाद एक्चुअली तुम देखोगे तो इंडिया का जो स्ट्रैटेजी है, पहला जब 1-2 विकेट चला जाता है, वैसे ही हमारा टीम कभी बॉम्बे में होते हैं, जैसे ही ओपनर निकल जाता है टिल द 10th बैट सब लोग पैड हो गया. पूरा पैनिक हो जाता है. एक विकेट गया और सब पैड हो जाते हैं. जो भी रेडी है जाओ. आएगा, वापस आएगा. सबको मालूम है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस है कि अभी ओपनर आउट है ना, अभी हमारा बैटिंग आएगा. तो ये इंडियन टीम का अब एक जो फर्स्ट इनिंग में जैसे एकदम गोबर किया था ना बैटिंग में, तभी ऐसे ही लग रहा था कि अरे यार ये वापस अपना वही हो गया. तो सेकेंड इनिंग में जब पहला अपना विकेट गया और इमीडिएटली दूसरा गया, मैं बोला ये इनका शुरू हो गया वापस. तब तूने सही बोला, वैसे ही बुमराह तक सब लोग पैड होके बैठ गए होंगे ऐसा लगता है. लेकिन फिर अपने लॉर्ड ठाकुर ने तो कमाल किया है पंत के साथ मिलकर. वाह. ठाकुर ने पूरा स्टेबल किया. आई मीन फर्स्ट इनिंग्स में भी वो जैसे खेला और सेकेंड इनिंग्स में भी जैसा खेला ना, आई मीन कोई वी वर एक्चुअली लुकिंग फॉर समवन लाइक हिम. वो जिस तरह से खेला, वो पूरा इनिंग्स को पूरा स्टेबल किया उसने दोनों इनिंग्स में. True.
I mean, Vinay, would you yesterday mind? there were so many Would you bowls. think I that? mean, we did not have caught behind, we did not have LBW. There were so many bowls over there yesterday, and that was the yes, best part. exactly. So they were not relying on people कि यार ये कैच छोड़ेगा अभी. एक पता है लास्ट में रहाने ने वो एक सिंपल कैच को इतना डिफिकल्ट बना दिया कि वो क्या बुमराह भी ऐसा सोच रहा है क्या खजूर है यार इससे कैच नहीं पकड़ा जा रहा है यार. Oh, वो इतना भड़का हुआ था when he was going back to the third man region. Yeah. तब तक ऐसा कर रहा था. Yeah. But yeah, Narayan, you were asking something. Yeah, I was asking you about आपके जो point पे कि do you feel that Thakur can be a nice replacement to Hardik? Definitely. I don't think Hardik is a test material. To be honest. No, he's saying even you should think of replacing Hardik from one days and T20. अभी हट्टा यार इसको. Yeah, I was looking at one day and T20 also. Yeah, I mean, we are over dependent on him. It's not. We should find more players like Thakur who can replace. Actually, it's a good challenge for Hardik because he had his position guaranteed. He somehow started feeling I am irreplaceable in the team, and when somebody feels that he's irreplaceable, he starts underperforming. So now I wouldn't agree to that. I wouldn't agree to that. Hardik has had a very very dicey lower back. Which is why he's not able to bowl. So now the challenge over here is if Hardik was full-fledged, who can bowl the maximum 10 overs and who can also take the bowling responsibility in a test match, then yes, I mean, he has to be in the team. I'm not denying that. Narayan, if you see Hardik's batting in the last few matches, I mean, the power which he used to generate before, I mean, I don't see the same power coming now. He's still recovering. Yeah, he's still recovering. He's not 100%. तुम देखोगे तो मुंबई इंडियंस के लिए भी उसको 4 ओवर डालने बोलोगे उसकी फट जाती है 4 ओवर. वनडे में आप देखोगे तो उसको 10 ओवर नहीं दिया जाता है. उसको सिर्फ 4 या 5 ओवर ही दिया जाता है. बाकी जो उसका 4-5 ओवर बाकी रहता है वो कोई और बॉलर मैनेज कर लेता है वर्कलोड. वो बॉलर साइड बॉलर उसको क्या बोलते हैं पानी में ऐसा पत्थर फेंकते हैं ना किधर जाता चिल्लर बॉलर. Oh my. Yes, no, you're right. I think all are valid points. Because of Hardik's injury, he's not that potent as he used to be. But Harish, आपने जो बोला ना कि उसको हार्दिक के लिए it is, I think हरीश का कनेक्शन वापस से कट गया. But हाँ, what I wanted to say was कि इसको शार्दुल ठाकुर को इतना लाइटली नहीं ले सकता अभी. ये अभी पांड्या ब्रदर्स जो है जो इतने चिल मार रहे हैं कि भाई हम लोग एकदम हमारा पोजीशन फिक्स्ड है तो it will generate a good competition which is good for Indian cricket. And see, they know Pandya brothers. लोगों को पता है कि वो लोगों का कोई competition है नहीं तो एकदम वो free में है. They're chilling out. But Thakur knows he doesn't get these many opportunities. तो जो मिलता है उसमें उठा के मार देता पूरा. और उसने वही किया उसको. And I think आगे भी पता नहीं और भी मतलब अपना आईपीएल में भी अभी देखेंगे तो प्लेयर्स है बट वो लोग उस लेवल पे आ नहीं रहे. जैसा शिवम दुबे भी है वही टाइप का ही है बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है वो लोग. वो जो बिग मैच परफॉर्मेंस जो कहते हैं वो लोग दे नहीं पा रहे. जो कि अपना लॉर्ड ठाकुर है वो मस्त से हर मैच में ऐसा कल वो एक उंगली से फील्डिंग हमने कितने सारे प्लेयर्स टेस्ट किए हैं who have tried. Our priority has been this missing all-rounder link, right? कितने सारे प्लेयर्स आके ट्राई मारा है बट किसी ने अब तक अपना एक स्टांस नहीं बना पाया कि हाँ योर सर्च कैन एंड. और देखोगे विजय शंकर आया था. देन वो एक दूसरा बंदा था ना जो सीएसके के लिए खेल रहा था अभी ये साल रिलीज किया आईपीएल में. दिस टाइप ऑफ बॉलर यार. अरे दैट पुणे का बंदा है यार. किसकी तू स्पिनर की बात कर रहा है?
Who was playing for CSK and they released him. Washington. No. Washington never played for Chennai. Nadeem. No, man. He's played for India. I remember. What I meant is, my point was, so yeah, Kedar Jadhav. So many French players have, been tried and tested. केदार जाधव तो भाई वो तो बहुत टाइम तक रुका अपनी टीम में. उसका तो कितने मीम्स बने थे कि धोनी की वजह से था वो टीम में. नहीं, he was good. एक टाइम पे बहुत he was very good, but not effective. I think वो इंडिया में अच्छा खेला था. हाँ, इंडिया में अच्छा खेल रहा था, but वही है जैसा नारायण बोला. I mean, we have tried and tested many players, but finally, hopefully, Thakur also goes in the same direction. Doesn't go in the same direction as sorry. Doesn't go. sorry. Yeah, doesn't go in that same direction. Yeah. Okay. Coming back to yesterday's match, and Harish bhai and Vinay, this question is for you both. First, Harish bhai, आप बताइए, रोहित शर्मा को का जो इनिंग्स था 127, okay, क्या उसमें आपको क्या अच्छा लगा, and how would you like him to approach the next match? पहले हरीश भाई, the way he has changed his approach, I mean, Rohit used to make 30s, 50s, 60s. मैंने क्रिकेट में डाला था 60s हो गया. It's time for Rohit to now, there was a lapse of concentration at that point of time. Whenever he used to reach 60s, 70s in the test match, what was good I think he realized the importance of him staying for a long innings. And even when he got out at 127, he was not happy with that shot. You could see on his face that he wanted to stay more, and that is the plus point in test matches. I mean, even he had scored 130, he still wanted to make that inning as long as possible. Yes, so that is the best. And the way he's leaving balls, especially somebody who is known to be a hitman. There were balls, had it been T20, usko utha ke usne bahar mara hota karke, he would have chased those balls. But the way he's leaving, I was thinking, immediately after this, he is supposed to open for Mumbai Indians in the IPL. How easy or how difficult it is going to be for him to swap within 5 days. I mean, the last test match gets over. And post 5 days, he is going to play as an opener in the IPL, and the balls that he's leaving, he's supposed to hit that ball in the T20 matches. So how difficult would it be for him to? हो जाएगा. मारेगा. T20 में सब बैट ही घुमाना है. I mean, he has brought a big change as an opener, and that is why those 6-4-2, 7-4-2 that we were used to seeing India has now changed to. Earlier की opener आया तो the 2 down used to be padded up. कि मेरा 2 down भी used to be ready. कि मेरा number भी आएगा within 3-4 overs. But at least that mentality has changed now. Yeah. And Vinay, thank you Harish bhai. Very good valid point. कि अभी IPL में next जाने वाला है. 5 दिन के अंदर you have to change your mentality. सब साइकोलॉजिस्ट और ये जो फिजियो और ये अपना सपोर्ट स्टाफ है, उनको दिमाग में भूसा भरेंगे, सब मतलब दिमाग में सब भरेंगे कि भाई अभी तक वो मारने गए, वो बॉल छोड़ना नहीं है, मार रहा. Vinay, you please, how do you Rohit's approach? I mean, मेरे हिसाब से तो he in the whole Indian team, he was the only batsman who coped up with that English condition. And if you see his all his innings, like starting from the first test match itself, it was you could see that he was improving in the next matches also. He was learning from the first test match and he was trying to adapt the changes into the other test matches. तो वो देख रहा था. उसका ये जो 127 वाला इनिंग्स था completely opposite. मतलब उतना फास्ट पेस नहीं था, वो आराम से खेल रहा था, अपने हिसाब से खेल रहा था. वो जो कॉन्फिडेंस था, मतलब उसने 6 मारा 100 पहुंचने के लिए. I mean, that shows a lot, about your confidence and how you approach the game. So that is actually, that speaks a lot about his batting also, how he adapted. Yeah. And he effectively helped KL Rahul, when he was seeing the way, because we know how KL Rahul used to get out before. He used to, have those nicks
and all those things. It helped. I mean, that rubbed off to KL Rahul, which is a good point, you know. Yeah. It rubbed off to Pujara also. Yeah, Pujara. Pujara was in a different mode. See, उसका दो है. यहाँ तो निको के out होगा, यहाँ तो you start playing his shots. Pujara is, you know, either this way or that way. Reversal कर दिया. I mean, we have seen this Pujara before. ऐसा नहीं. I mean, we have seen the way, you know, उसको समझता है. You know, if I start defending over here, नहीं जम रहा है. So let me counter attack, and which even Rahane should have done. You know, but I don't know. I mean, let's not. I mean, yeah. Dave, what do you feel? Do you feel? Yeah, no. Do you feel Rahane will get replaced? I'll come to that, Harish bhai. यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है? एक अपना यहाँ पे रोहित शर्मा है. वो खुद का पिच खुद के साथ लेके चल रहा है. लीड्स में पूरा इंडिया इधर उधर तीतर पीतर ऐसा आउट हो रहा है, ये कर रहा है. पूरा टीम नहीं यार, और ये भाई आराम से टुक मार रहा है, आराम से खेल रहा है. ठीक है, he has his own pitch. और इधर दूसरा रहाणे है. यहाँ पे ओवल में पूरा दुनिया, वो कोई गली का वो जा रहा, वो भी आके मस्त से लेफ्टी खेल के वो सेंचुरी मार के जाता है. लेकिन रहाणे बेचारा खेल ही नहीं पा रहा था. वो अलग खुद का एकदम ऐसा बाउंसी पिच लेके चल रहा है. पता नहीं उसके साथ ऐसे ही हो रहा है. To answer your question, Harish bhai, what I feel is this Indian squad, inclusive of अपना जो coaching staff and everybody, उन लोग को ये टीम जो है, इन लोग में बहुत फेथ है. तो मेरे को लगता है ये लास्ट मैच they'll give the opportunity to Rahane one more time, one last time. मेरे को ऐसा लग रहा है. And अश्विन अनफॉर्चुनेटली, ये हम लोग इसके पहले वाले एपिसोड में, मतलब आप लोग आए ना, उसके पहले मैंने और नारायणन ने इंग्लिश हम लोग अनकॉमेंट्री रिकॉर्ड किया. उसमें भी हम लोग ने यही बोला था कि अश्विन आई थिंक विल मिस आउट एंड रहाणे अंदर रहेगा. नारायणन, आई विल ब्रिंग यू इन दिस डिस्कशन, प्लीज बोल. नहीं यार, क्योंकि द रीजन मुझे लगता है अश्विन मिस आउट होगा क्योंकि मैनचेस्टर इज नॉट अ लॉर्ड्स और अ ओवल विकेट. तो स्पिनर फ्रेंडली जो बोलते हैं वो उतना स्पिन फ्रेंडली नहीं है जितना सीमस के लिए असिस्ट होगा. तो इसीलिए लुकिंग एट, हम जब ओवल और लीड्स में दोनों में जीत चुके हैं, नोइंग गोइंग इनटू मैनचेस्टर सीम फ्रेंडली है, तो मुझे लगता है कि जो जट्टू है, ही इज जस्ट इनफ. नो, Jaddu may not even bowl as much as what he's bowled in Oval. He might just be bowling to give a little break to one of the quicks, or for them to recover or to run through a few overs to get the new ball. Otherwise, I don't see Jaddu bowling much in Manchester. तो इसीलिए जब ऐसा situation आती है तो yes, Ashwin may be sitting out. But on the other hand, yes, I completely, देव ने जो बोला वो सही है, क्योंकि इतना अगर लंबा रोप अगर किसी वाइस कैप्टन को दिया जाता है, then I do understand that people are fed up because, you know, they want runs from him. And yes, as fans, मुझे भी runs चाहिए, और मेरी तरह काफी सारा और fans होते हैं जिसने runs चाहते हैं राणे स्कोर करे. बट राणे ऐसा चीज है कि शायद these are all mortal wickets. इसमें मुझे रन बनाने का मतलब नहीं है. जब असली टारगेट आएगी तभी मैं रन बना लूंगा, तब तक मैं चिल मारूंगा. तो शायद तो अभी जिसको मेहनत करना करवा लो, आजू बाजू में मैं हूँ. अगर विराट को की इंजरी हो गया तो मैं कैप्टनसी उठा लूंगा. बट अदरवाइज ये सब 10-20 रन बनाने का कुछ मतलब नहीं है. उल्टा पैर ऊपर रखो, एसी का हवा खा लो, खत्म बात. अरे ये इंजरी बोला, सॉरी इंजरी तूने बोला नारायण, मेरे को तो दूसरी बात का डर लग रहा है कि अपने कोच साहब टोपी पहन के बैठा है मस्त, अभी कोविड पकड़ के. कोहली और बाकी की टीम बच गया कि वो लोग इनके. अरे नहीं यार, वो दारू एक्स्ट्रा 1-2 मारा रहेगा, चीका होगा. अरे चीका और कोविड करके बोलो. अभी भी the only solution to COVID is दारू, alcohol. उसको अलग ब्रांड मिला रहेगा बोतल का, और उसको अकेला ही पीना था. तो बोला तो मैं होटल में पिएगा. ये तो शेयर नहीं होगा. Do you guys seeing Siraj being replaced by Shami? Oh, I wouldn't. Yeah. I wouldn't. I would continue. Yeah, with I would look at. I look at Siraj being dropped for Manchester and Shami coming in.
Yeah, maybe. I think Shammi brings And a good. for England, that Overton knock जो घुटने में क्या बोलता सॉरी एल्बो में जो लगा oh my god it was Very painful. cringing. painful. I cringed the moment that and you know irrespective of wicket or not I mean personally I know how that feels man that will true. hurt. I just hope it's not a fracture because अगर fracture है तो he's definitely not going to be playing but उनका squad में अगर तो अब देखोगे तो Wood comes back in. Wood comes back. Yes. So and now Butler is also coming back in after his paternity leave. Yeah. So if Butler comes back in, will they drop Pope? Or what do they do? Maybe Hamid or maybe Hamid is an out and out opener. Hamid तो opener है. Yeah. नहीं वो तो समझ गया. It's either Pope or Butler or Besto. Like a rotation. Besto you cannot because Well, then I don't think they would take Butler because Pope played well in the first inning and Butler has not batted so well. I mean, you know, if you see Butler scores throughout the series, I mean, so that's something that Butler, we'll have to decide. I see only Wood coming in place of Overton. That's the change I see, unless they decide to rest Anderson or Robinson, which is impossible. No, Robinson the no second chance, and I don't think they will rush Anderson because he's the only guy who's been giving them the breakthrough. So it's now a toss up. मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड शायद bowling side में एक means obviously Overton is now a doubt, but अगर Overton is fit and it's not as serious an injury, then I don't think they will tinker with their bowling. I think the only change would be a toss up between Butler and Pope. Or Besto. I think Wood will come back because Overton. I mean, I was not impressed with Overton's bowling, so I personally feel Wood would come back. I mean, come on, yaar. If you're looking at 8 match का performance and then drop him, that would be cruel as well, right? I mean, Overton 2 साल के बाद इंग्लैंड का टेस्ट टीम में आया गया and जब पहला मैच लीड्स में खेला तो actually he bowled really well. And you can't just look at one match at the Oval and say कि हाँ ठीक है drop him. I mean, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब किसी प्लेयर को अगर टीम में मौका दे रहा है give them a reasonable run. I mean unless you see there is a technical flaw which you need to correct, yes that requires attention, but otherwise you can't look at a one match form to pick or drop a player. Yeah, but then what I feel is कि इनका जो rotation policy है उसमें शायद Overton को बिठाया जाएगा maybe and then Wood might come in. Because I mean, Robinson see, Overton is coming back after 2 years, Devang. After 2 years. Yeah. That is not rotational policy. No, what I'm saying, I understand. What I'm saying is, if they've moved their bowlers, right? So usme agar that is the only reason why I see him out. Varna I see him in. Just that's what I'm saying. Ke agar unko wo sochna hai, only then they might get in. Right now they can't afford to look at rotational policy because the series is they have to play with the It's a seaming wicket. It's a fast bowler's delight. Yeah. I need to drop out. I have a meeting. You guys continue. Okay. No worries. Nice talking to you guys. Take care. Bye. Bye. Hope we have a 3-1 and then we meet again after 3-1. Oh, absolutely. Maza aayega. Chalo. Have a good one. No 2-all, 3-1. No. 3-1. 3-1. Yes. Chalo. Okay. Continuing with this, Vinay. What do you think? क्या लगता है कि बैटिंग में कुछ changes, bowling में, Indian side and English side? बैटिंग में तो कोई चेंजेस नहीं, वो जो है वो सेम टीम रहेगा because see if they had to drop they would have dropped Rahane, but I don't think they would drop him. They will give him a chance, and everyone has played in bits and pieces, so they will give them chances. I don't think they will drop anyone. Bowling में even I don't think they will replace Siraj because knowing Kohli वो change नहीं करेगा. Winning team है, winning combination है, वो करेगा नहीं changes. वो है इंग्लैंड का I mean I see only Overton getting replaced अगर वो injured है तो by Wood. Okay. Otherwise तो Butler आने से तो Pope भी he has performed, खेला है वो भी तो I mean ये कुछ और major changes दिख नहीं रहे इसमें. Some important मतलब crucial decisions दोनों टीम को. Oh, England also has England के पास साकिब महमूद भी है.
जो अब तक एक भी मैच नहीं खेला है. हाँ वो तो भी हो वो सकता अच्छा है. पेसर है, but लेकिन will हाँ, they do you do want it to in the give him the final chance? test? Yeah. Yeah. definitely. But for all you know, it could also be that X factor, right? Someone Yeah. whom Yeah. India has not played much. Yeah. You could, Much. because this Haven't is the played, do I or think die just match, once. right? For Yeah. against India. I don't think he's played it even once. Yeah. Oh, so this would be his debut, yeah. Against India. But they do have Yeah. him in the lineup, yeah. Yeah. But the Indian batting, they were dropping Rahane. They were sending him after Jadeja and Panso. I mean, after Jadeja. So somewhere I felt that would affect his confidence. मतलब जो भी बचा कुचा है और उसको already वो उतना level पे नहीं है जो खेल पा रहा है. And then you're sending number 4 batsman, you're sending him down the line. तो उसका confidence तो एकदम खत्म हो जाएगा. इसका एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे लगा कि द रीजन ये शायद किया होगा इज बिकॉज जडे जब नीचे 7वें पोजीशन में खेलता है तो ही इज प्रैक्टिकली प्लेइंग विद ओनली द टेल. तो अगर वो अच्छा बनाता भी है रन्स तो ही स्टार्ट्स लूजिंग आउट हिज पार्टनर्स एंड देन ही स्टार्ट्स टू हिट and then he gets out. So they assume that if Rahane is lacking that form, why not give Jadeja a promotion, and he will have other set batsmen along with him before the tail comes in. Along with Rahane, he will come in next. So एक पोजीशन या दो पोजीशन का Rahane के लिए is just a demotion of one position. He is not going to play at Jaddu's spot. For us, for Jaddu is a promotion of 2 spots. So it was just a trial to see whether that may work, and that is I felt it is not to protect Rahane. It is just to see whether Jaddu being given a chance to work with the set batsman or a proper out and out batsman can change and see whether he can score bigger runs or not. हाँ ठीक है, इस मैच में ज्यादा चला नहीं, 17 रन और 17 रन ही बना है पहले इनिंग्स में, तो ठीक है चलेगा. आई मीन दैट इज समथिंग यूनिक एंड दैट इज व्हाट विनय आपके पॉइंट के हिसाब से आई डोंट थिंक इट विल अफेक्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ Rahane. I want to add one point here. I want to add one point here. What both of you said, yes, if you look at it from Rahane's point of view, Vinay, your point is right कि उसको लगेगा कि यार मैं नंबर 4 हूँ, अपना टीम का पिलर हूँ और मुझे पीछे बिठा रहा है. लेकिन जो नारायण ने बोला कि जडेजा को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ऊपर आने के लिए क्योंकि वो टेल के साथ बैटिंग कर रहे हैं. इसका और एक पॉइंट भी ये है कि अपने टॉप 5 में कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है, एंड वी हैव 2 बैक टू बैक विद पंत एंड जडेजा हु आर बोथ वेरी सिमिलर, हु आर अटैकिंग बैट्समैन. So rather than wasting one wicket over there, if we put like a sandwich Rahane between Pant and Jadeja, तो वो इंग्लैंड बॉलर्स को एक थोड़ा लाइन एंड लेंथ ऑल्टर करने पे भी फोर्स करेगा, एंड दूसरा कि इट विल गिव Rahane more cushion कि if there is a new ball, it is a harder ball, it's seaming ball, it gives him more time कि वो थोड़ा और उसको मूवमेंट ज्यादा नहीं मिलेगा and he can settle in. So I think these are couple of factors they might have thought about. This is what I feel. Yeah. All right. Correct. Awesome. Any last comments? It has been an amazing catch up and बहुत अच्छा लगा हम लोग डिस्कशन करके. कोई लास्ट थॉट्स कल के विक्ट्री के बारे में कुछ बोलना है? विनय, you and Narayanan, say something before I wrap it up. I mean, this is a historic win. If you look at it, the way they came back, no one would have expected India to come back so strongly and then win this test match. So in a way, it's kind of a stamp, like an authority on that we are there. So that is a historic win in my opinion. Absolutely, well said. और if you remember अपना आज ग्रुप पे एक शेयर हुआ था, लंदन हैज फॉलन, वो एक अच्छा पोस्टर किसी ने शेयर किया था. ओवल और लॉर्ड्स दोनों पे इंडिया ने जीत मारा है. Awesome. And I mean, you can just a small line. So ऑस्ट्रेलिया में जो
Gabba was the turning point. Yeah. This was the, in my opinion, this was the turning point. So people will always, it will hurt England very badly. This Yeah. is what, it's a big, it will hurt them very badly, in my opinion. Yeah, absolutely. And Narayan, I'll bring you in this. Your last words for this episode. I fear when you say it will hurt England very badly, because that's exactly what we said after the Lord's loss, and they This is came back different. roaring and Don't worry, innings this is defeat. different. So I ऐसा don't दो want बार I नहीं don't होता है। want to. दो बस बार नहीं हमने होगा। 2 बार जीता तो वो भी 2 बार जीत सकते भाई हैं। एक बार उसको टपली मारा, दूसरी बार तो ऐसा वो शेर का पंजा जो सिंघम का है ना, वो मारा है। तो इससे ऊपर आना मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। I hope not, but yeah, let's hope. But Rapchik ball by Bumrah to dismiss Bairstow. Sure. Unexpected. And knowing that the support staff is all going to be quarantined and under room arrest due to COVID, maybe they need to look at our videos to analyze and work out for the next match. देखो भाई, देखो आओ इधर, ये लोग बोल रहे हम लोग कुछ। एक कोहली बैट ऐसा पकड़। All right. Thank you, Narayan and Vinay, Harish, Mrugesh. You could not join us, but we had fun catching up, fun discussion. And thank you, all of you, for watching this episode. Enjoy, and we hope कि India अभी वापस से और एक बार जीतेगा मैनचेस्टर पे, and 3-1 हो जाए सीरीज. Good night. All right. Thank you. Right. Okay. Welcome, Hiten. We just are having, हम लोग के सब एक एक करके सब हमारे दोस्त join कर रहे हैं. We had Harish, Mrugesh और Vinay, and Narayan and myself. हम लोग इस शो के मेन करता धरता है. हरीश, कल के सॉरी Hiten, कल के मैच का रिएक्शन, क्या खेली इंडिया? Absolutely. बहुत congratulations अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में. Yeah. I was not expecting this, for them to make a big comeback. I thought we had done and dusted, after the last test where we lost so badly. Yeah. But again, kudos to Kohli's men. Amazing comeback, और जो performances, individual performances दिए अपने बंदों ने कमाल किए. I was never expecting Bumrah, to use the reverse swinging Yorkers so effectively. I mean, that was the turning point for me, and then Lord Shardul, हम लोगों ने तो बात बहुत की है अपने ग्रुप चैट पे उसके बारे में. So amazing performance. Yeah, that's all. I mean, that's all to sum it up. It was a great win. Looking forward to the next venue. I'm not Manchester, right? Yeah, Old Trafford, so Manchester. I think बादल कुछ होने वाले बारिश वाले ऐसे सुनने में आया है. Hopefully that goes true and it's a draw, so that we can, India win victory. change the series. Yeah. Because flip flop है ना अपना performance. You don't know how what kind of a performance these guys will give in the next test. Yeah. No. That's a very good point. अरे बारिश होती है तो अपन बैठे 2-1 जीत गए, मजा आ गया. लेकिन और नहीं, अगर बारिश ना होती तो we would have been leading 3-1 also. 3-1 already. हाँ. लेकिन अभी जो मजा और आएगा अगर हम लोग ने ये बारिश ना हुई और हम लोग मैच जीत गए तो मजा और दुगना हो जाएगा. लेकिन absolutely. I mean वैसे होता है तो वो बोलते हैं ना अपने हिंदी में बम्बई लगे सोने पे सुहागा. अरे क्या बात है. आप बट रिस्क नहीं लेना है ना अपनी इतनी भले हम लोगों ने बहुत सारे वेन्यूज कॉन्कर किए, बट वो एक इनकंसिस्टेंसी कभी कभी होती है ना. इनका परफॉर्मेंस एकदम ऊपर से नीचे आता है, कभी दे भी नहीं. सो दैट कॉस्टेड अस द मैच, राइट? एंड वन इनिंग वी ओनली स्कोर्ड 98 or 90 or something like that. 78, sorry. 78. And there was no coming back from that kind of a first inning score. In spite of playing so brilliantly in the
third inning Lots as test. well. Yeah, lot test. So, anyway, that's what I would say about our. No, some again unpopular. This is what the beauty of the show is. सब लोग अपने unpopular opinions देते हैं, uncommon opinion देते हैं. इसलिए हमारा शो का नाम है Uncommentary. कि हर एक का सेम ओपिनियन होएगा तो ये कॉमन हो जाएगा. फिर तो आपने एक अलग पहलू हमारे सामने रखा है. एंड मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं भूल गया. मैं इतना एक्साइटेड हो गया आज कि हम कि हाँ, जैसे हम लोग अब तक इस शो में हम लोग ने डिस्कशन किया है कि ये इम्पोर्टेंट विकेट था, ये एक अच्छा इनिंग्स था. हितेन, आप मेरे को बताइए कि आपके अकॉर्डिंगली जो कल नहीं परसों जो रोहित शर्मा ने जो बैटिंग की, उसके बारे में आप कुछ बोलिए प्लीज. और उसका शे के साथ जो चेतेश्वर पुजारा के साथ जो पार्टनरशिप था उसके बारे में कुछ बताइए. Absolutely. I mean, it was very, I would say, बहुत laid back लगते हैं अपने shots में, लेकिन रोहित शर्मा is known to play fluent shot with in the white ball game. But it's very heartening to see अपना मुंबई का लड़का रोहित to wait and play deliveries, just अपने shots को pull down करते हैं, नीचे बॉल को एकदम properly play करते हैं. Yeah, and to see somebody who is such a champ in white ball cricket to actually defend all these balls and not to touch any outgoing balls is something I really admire about Rohit. I mean, it's been a revelation from his end. Cheteshwar Pujara, yes, I mean, last, if you see two test series which India has played, right? उसका परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में काफी बेटर था, बट इस बार काफी फ्लेकी है, ऊपर नीचे. But he delivered the goods when it mattered, right? I mean, we actually needed our top 3 to 4 guys to give us a very good start, and not only a good start but consolidate and take it forward, to keep playing during the session. So flawless खेले वो दोनों. I don't know what happened. नया बॉल आते ही पहले ही ओवर पे उन्होंने आई थिंक इट वाज अ फॉल्स शॉट फ्रॉम रोहित. पूरा पुल तो मारता है यार, आधा कुछ नहीं खेलना चाहिए, राइट? उसका पूरा पुल तो ग्राउंड के बाहर चले जाता. या that's what. So I mean, Cheteshwar also got a good ball, and unfortunately he nicked it. He played across the line a bit. So but it was I was very happy for them as a especially for Cheteshwar Pujara. He was under the gun for the entire series almost. Right. So he had to deliver. But Rohit had already given his starts. Right. So we're quite aware about it. But Cheteshwar was being hounded from all the sides. Along with Ryan. So उन दोनों को इतना लंबा पार्टनरशिप करते हुए देख के इतना मजा आया. I mean, यार दिल बोलते हैं ना, दिल गार्डन हो गया वैसा. दिल गार्डन. Yes. And just earlier हम लोग ये बात कर रहे थे कि इस साल में टेस्ट क्रिकेट जो है यार, मतलब आप बोलते हो कि लंबा फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, बोरिंग है, 5 दिन चलता है, कोई नहीं देखता है. वनडे में भी अभी बोर हो गए, T20 अभी ज्यादा होना चाहिए, टेस्ट मैच भूल जाओ. इस साल में आप देखो हमारी टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी है. पहले सिडनी, फिर गैबा, फिर लॉर्ड्स और अभी कल ओवल. मतलब माइंड ब्लोइंग. नारायण, तू अग्री करता है कि टेस्ट क्रिकेट स्टिल नंबर 1 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट? हाँ, absolutely, यार देव. To be honest, it's like when you are born to play cricket, when you want to play cricket, हमें मैदान में जाके सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि फ्रंट फुट डिफेंस स्ट्रेट ड्राइव, फ्रंट फुट डिफेंस स्ट्रेट ड्राइव. टारगेट मत देखो, बस take each ball on its own merit and then play the shot accordingly. No loose shots available, otherwise you will be getting a hearing from your coach once you walk back to the pavilion. I mean, there is another exit route where you can escape the ground and run back home, but
but you will definitely be getting a hearing. But yeah, that said, it has been a fantastic uh, journey from Australia, coming back home after a long time, playing against England, then going into England, playing the WTC, and now the present series against England as well. But yeah, if we just on a more casual thing, आप देखोगे तो एक wallpaper screensaver आती है ना, it's like this, like this, like this. That's how our performance has also been. We touch that and then slide back down and again go back. Yeah. And yeah, but that said. ओवल मैदान का पिच जो था वो लगभग हमारी बॉम्बे की ओवल मैदान जैसी थी. Nothing in it at all. कुछ भी नहीं था. And I love my Bombay Oval Maidan. I have good memories playing there. Good, beautiful, flat track. I mean, batsman paradise. And yeah, as a bowler, तो bowling करना तो मुझे बहुत शौक है. तो it's an experience altogether. I would love. If given an opportunity, I would love to play in the Oval in London as well. But for now, I'll take the Bombay Oval experience and keep it close to me. Yes, नहीं, you're right कि हितन भाई हम लोग यही बात कर रहे थे कि अपना तो इंडियन बॉलर लोग को तो ये घर के जैसा फीलिंग लगा होगा कि एक तो धूप निकली है, गर्मी है और पाटिया पिच है और पब्लिक सपोर्टर सब इंडियन ही है, तो लग ही नहीं रहा है इंग्लैंड में, ऐसा लग रहा है बॉम्बे में मैच हो रहा है, तो उनको होम वाली फीलिंग आ गई और जीत गए. Right. Fortunately, India, anywhere it tours, right? I mean, it gets amazing response. Yeah. I should say this, when India was in Pakistan as well, the last series, I don't even remember the date, but whenever it was there were equal 2006. amount of, yeah, so I still remember. Thanks, Narayan. So वहाँ पर भी you would have seen बहुत सारे Indian supporters थे. Yeah. So where I think so, if you go to Mars or Moon to play cricket, I guess अपने को उधर भी supporters मिल जाएंगे. So having said that, इधर के pitch का जो feeling था, I mean, people were just dying for this kind of a pitch, especially a top order and middle order. You haven't fired much, right? And we got it. And first innings, everybody knows what happened, right? So it didn't go according to the plan. But the way these guys have bounced back, I guess my brother was talking to me yesterday that he wanted actually to watch a match in his lifetime in London Lodge. Yeah. तो अगर वहाँ पर जाने का मौका मिलता है तो बहुत सही है, right? And to see, I mean, to see Indians perform this way is amazing anywhere in the world. Yeah. So it's a treat for the guys in UK. Yeah. I mean, Indian team is performing and it's about to win a series there. Yeah. So simply amazing. For my memories, I've seen few matches in Wankhede. One of the test matches of India, Sachin और कामली वाला टाइम था, वो टाइम बच्चा था मैं तभी. And then एक वनडे देखा था बांग्लादेश वाला. It was a sad part. 90 पे ऑल आउट हो गई थी बांग्लादेश. मजा नहीं आया था. But the ambience, the atmosphere is just simply amazing. Being there, the support, and I can imagine wherever India goes, उनके लिए तो बहुत सारा support रहता है. Oh, absolutely. वानखेड़े से मेरे को एक मेरा बेस्ट मेमोरी, ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर का जो लास्ट मैच था वो है, लेकिन अगर मैच पर से हम लोग देखें कि मेरा बेस्ट मेमोरी जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 107 का टारगेट दिया एंड दे वर बंडल आउट फॉर 96. तो the 2-day test, 2.5 days में खत्म. 3 दिन बारिश हुआ. Murli Karthik picked up a 5-4 on both innings. That was my best. हाँ, उसमें मेरा दोस्त, हम लोग है ना, ये मैच देखने गए थे एंड मैं मेरा दोस्त को बोला व्हाट इफ इंडिया विंस. बोलता है मैं कपड़ा निकाल के नाचेगा फिर. एंड जब जीता ना, वो गांगुली के साथ शर्ट ऐसा घुमा रहा है, नाच रहा है. Was such an amazing victory. Zahir Khan पहले ओवर में विकेट लिया और विकेट्स constant ऐसा इंटरवल्स पे आते थे. So all these test matches, they remind you that test cricket is the best form of cricket. So that is all what we were talking about, ladies and gentlemen.
And thank you for joining me, Hiten. Any last thoughts before I wrap it up? Finally, for the last time, हम लोग ने 3 बार अभी किया है कि I'm wrapping it up, and finally, अभी final wrap up है. Hiten, any last thoughts before I call it the wraps? Sorry, I would have joined earlier in the day, but All good, I was no. not. Yeah, but all anyways, looking forward to the last test match of the series. Let's see. I mean, if you get a good climate, good atmosphere, I think India should be in a very dominating. It is right now in a very dominating position and a positive state of mind that should help India to win the last one. Yeah. My take is 3-1 India. I think so. Yeah. I mean, irrespective of whatever the rain gods help us or not, whatever. 3-1, absolutely. And which drink will you be opening up? Champagne, single malt after the victory? After the victory, actually, Sawan chalu hai, so basically cold drink se kaam chalana padega. Acha, okay. But I would. Kachi beer. पास एक blue label पड़ा हुआ है. Acha. थोड़ा सा. So I guess I'll just do that. I mean, in case सावन नहीं होता तो वही करता था. हाँ. Post सावन. Absolutely. And what about you, Narayan? I hope I'll be opening up a beer. I'm more of a lager person. Oh yeah. Chilled, cold one. Cool. But yeah, I mean, I'm not looking at. I do not want a draw, to be honest. I mean, I do understand everyone will be keen for a draw. I just hope weather doesn't play spoil sport. I want a proper result. इंडिया जीतना चाहिए. मेरे को तो यही result चाहिए बस. Yeah, I would love if India can win. Yeah. Awesome. Thank you, Narayan. Thank you one more time, and thank you Hiten bhai to finally make this. And हम लोग ने जो सोचा था इतने टाइम से हम लोग सोचे थे ये episode finally shoot हुआ. Next time we'll get everybody, Piyush, Mrugesh, सब लोग एक साथ में. आज एक करके सब लोग आ रहे थे. अपन एक साथ ऐसा रिकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है? Thank you, sir. Good night. Bye. Bye.